खुशामदीद है आप सभी का एक बार फिर से एशियन न्यूज़ अब के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। लगातार जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वही सब मद्देनज़र रखते हुए श्रीनगर प्रशासन ने बहुत सारे फैसले उठाए हैं, जिसमें वीकेंड लॉकडाउन एक अहम फैसला था जो आज ख़त्म हो चुका है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक शख्सियत जो किसी तारुफ या तारीफ़ के मोहताज नहीं है। जी हम बात करते हैं डॉक्टर MS खुरू साहब। इनसे बात करेंगे और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या एहतियात करना चाहिए लोगों को। अभी जो स्टेटस है जम्मू कश्मीर का 3000 के करीब लगातार केसेस को पॉजिटिव पाया जा रहा है। वही एक और भी जो साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो भी लगातार पूरे इंडिया में बढ़ते जा रहा है और जम्मू कश्मीर में इसके करीब केसेस को पॉजिटिव पाया गया है, जो एक डायरेक्टर हेल्थ का कहना है कि उसमें जो स्प्रेडिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है NH चैनल में सर। शुक्रिया आकिब साहब। डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि लगातार केसेस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने पिछले साल जब डेल्टा वायरस काफ़ी ज़्यादा स्प्रेडिंग रेट थी उसकी, जब केसेस बढ़ते जा रहे थे सर, तब भी आपने एक संकेत दिया था लोगों को कि केसेस बढ़ते जाएंगे, एहतियात बढ़ते। लेकिन आज कहीं ना कहीं केसेस को फिर से पॉजिटिव पाया जा रहा है और नया वेरिएंट है, काफ़ी स्प्रेडिंग रेट है उसकी। क्या कुछ कहेंगे इस नए वेरिएंट पे और आज के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं सर? आकिब साहब, मैं अर्ज़ करूं कि ये जो थर्ड वेव हमारे JNK में अभी 1-2 हफ्ते से आ रही है, ये मेरे ख्याल में ये थर्ड वेव, पहले तो जो सेकंड वेव थी वो मेनली डेल्टा वायरस की थी। अभी आप ये देख रहे हैं कंप्यूटर पर कि डेल्टा वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें कितने म्यूटेशंस थे। अब ये जो थर्ड वेव आई है, मेरे ख्याल में ये मेनली डिटरमाइंड है बाय दिस न्यू वेरिएंट जिसको हम ओमिक्रॉन किया, जो साउथ अफ्रीका से इजाद हुआ, दरियाफ्त हुआ और सब वर्ल्ड थोड़े इतने कंट्रीज़ में, मेरे ख्याल में मोर देन 160-170 कंट्रीज जो हैं, already about 80-90 countries have been affected by this new variant called Omicron. Omicron क्या है और इसमें और डेल्टा और बाकी जो अल्फ़ा बीटा गामा जो वायरस ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न थे, इनमें क्या फ़र्क है, ये बड़ा ज़रूरी जानना है कि ये क्यों थर्ड वेव ओमिक्रॉन से आई और इसकी क्या खासियत है। तो ओमिक्रॉन में एक ऐसी खासियत है कि इसकी जो ये म्यूटेशंस हैं, अगर आप देखें पहले अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा में कोई 10-20 म्यूटेशंस थी और डेल्टा में कोई 20 या 30 म्यूटेशंस थी, मगर इसमें जो म्यूटेशंस हैं वो कोई 50 के करीब हैं। और जो सब ये जो म्यूटेशंस हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह में पाई गई जिसको कहते हैं हम स्पाइक प्रोटीन। वो प्रोटीन वायरस की जो बाहर के जो सरफेस पर है और जो अटैच होती है सेल में, कोई 30 म्यूटेशंस इसके सरफेस पर है। तो भी आप ये देख रहे हैं, ये डेल्टा वायरस है, इसकी स्पाइक प्रोटीन, और ये ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन। अब देखिए ये जो मेनली ये स्पाइक प्रोटीन है, कोई 30 म्यूटेशंस में है, इसमें कोई ज़्यादा 10-15 थी ज़्यादा। और ये जो म्यूटेशंस हैं, सब जो म्यूटेशंस अल्फ़ा बीटा गामा की जो म्यूटेशंस है वो तो है ही इसमें और ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। तो इसका मतलब हो गया जो खासियत बाकी वायरसेस की थी, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की, वो तो ओमिक्रॉन में है, मगर इसमें और म्यूटेशंस हैं तो इसकी खासियत और ज़्यादा है। ये परेशानी है। इसीलिए जो ही ये वायरस दरियाफ्त हुआ, WHO ने इसको इमीडिएटली वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया कि ये परेशानी करेगा क्योंकि इसकी सब म्यूटेशंस बाकी वायरस वेरिएंट ऑफ कंसर्न की है और ज़्यादा म्यूटेशंस है, तो इसकी खासियत उससे ज़्यादा बढ़ गई। तो वो हम आज अगर आप उसकी हम डिटेल में बात करें तो पता चलेगा कि ये क्यों इतनी परेशानी कर रहा है ये ओमिक्रॉन। डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि जो डेल्टा वायरस था, क्योंकि वो उतना उसकी जो स्प्रेडिंग रेट थी उतना ज़्यादा नहीं थी, लोग हॉस्पिटलाइज ज़्यादा होते थे,
लेकिन इसमें कहा तिबी माहिरीन की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है उसमें कहा गया है जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसमें स्प्रेडिंग रेट ज़्यादा है लेकिन माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं। सर इसमें थोड़ा हमारे नाजरीन को आप बताइएगा कि क्या क्या सिम्टम्स है इसमें और अगर माइल्ड है तो क्या कुछ है इसमें। आपको सब मैं ऐसे बता दूं कि 3 चीज़ें हमने देखनी है वायरस में। 3 चीज़ें। पहले ये स्प्रेड कैसे होता है, एक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसकी क्या स्पीड है। दूसरी कि इसकी डिजीज़ जो होगी कैसी होगी और सिवेरिटी डिजीज़ की कैसी होगी। तीसरी चीज़ भी देखनी है कि ये अगर आप वैक्सीन करेंगे या अगर आपको प्रीवियस इन्फेक्शन है या अगर आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ली हैं तो आपको कितनी प्रोटेक्शन मिलती है उसके साथ। तो अगर आप डेल्टा वायरस देखें, पहले तो अगर आप ओमिक्रॉन की बात करें, ओमिक्रॉन की स्प्रेड रेट कोई 4 times मोर देन डेल्टा। सो देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट कि जो ओमिक्रॉन की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है एक आदमी से दूसरे में वो इंतहाई फास्ट है। सबसे ज़्यादा वायरस जो फास्ट होता है वर्ल्ड में वो मीजल्स का वायरस है। तो दैट इज़ सपोज टू बी द बेंचमार्क फॉर ट्रांसमिसिबिलिटी, क्योंकि उसका जो आर नॉट है कोई 18 है, वो बहुत ज़्यादा है। तो अब पाया गया कि ओमिक्रॉन जो है उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है इट इज़ इक्वल टू और मे बी इवन मोर देन मीजल्स। सो इट इज़ रियली क्रॉस्ड ट्रांसमिसिबिलिटी में जो फैलने में है ये इंतहाई फास्ट है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो डेल्टा वायरस और जो ऑलरेडी ये जो SARS-CoV-2 वायरस थे बाकी वेरिएंट, दे वर अटैकिंग नोज, थ्रोट एंड लंग्स। 3 जगह ये अटैक करते थे क्योंकि जो ये एस प्रोटीन है, ACE2 प्रोटीन, वो तीनों जगह है और बाकी जगह भी जिसमें है, मगर ये 3। मगर ओमिक्रॉन में एक खासियत है कि ये लंग्स को ज़्यादा अटैक करता नहीं है, ये मोस्टली करता है अटैक थ्रोट को। सो ये मेनली जो वायरस होता है ये थ्रोट से, एक इंसान थ्रोट में अटैक करता है, लंग्स में ये इवन एनिमल स्टडीज़ हैव शोन कि ये लंग्स में ज़्यादा अटैक करता नहीं है, ये मोस्टली थ्रोट सेल्स में अटैक करता है। वो दैट इज़ रिलेटेड टू कि ये कैसे अटैच करता है सेल्स को। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, बट देयर इज़ नो डाउट कि ये सिर्फ ज़्यादा थ्रोट सेल्स को अटैक करता है और लंग को कम। तो मेनली जो हमें पहले डेल्टा में थी या बाकी वेरिएंट में थी, मेन था बिकॉज ऑफ लंग डिजीज़। लंग से निमोनिया होता था, ऑक्सीजन कम होता था तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी, तो वेंटिलेशन की ज़रूरत होती थी। अब ओमिक्रॉन में मोस्टली सिम्टम्स हैं, दे आर मेनली रिलेटेड टू थ्रोट, सो इट विल बी मेनली थ्रोट सिम्टम्स। सो निमोनिया जिससे कम होते हैं, इसीलिए आप जो कह रहे थे कि ये डिजीज़ माइल्ड है। तीसरी बात कि अगर आपने वैक्सीन लिया या अगर आपकी अर्लियर डिजीज़ हुई या अगर आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ली तो यू आर प्रोटेक्टेड बाय अल्फा, बीटा, गामा एज वेल एज डेल्टा। प्रोटेक्शन कंसिडरेबल थी। मगर इसमें क्या है इस वेरिएंट में, दैट इट इवेड्स ऑल इम्यूनिटी, सो यू गेट infections and reinfections in people who already are vaccinated or who already have a disease earlier or who have had a monoclonal antibodies. So immune invasion इसको कहते हैं, evasion कहते हैं कि ये it will cross over your immunity and it will infect those people already who are even one vaccine or who have taken 2 vaccines. It does not give as much protection as it gives for Delta and other variants. सो इसमें 3 खासियत हैं। एक तो इसकी स्प्रेड रेट है एक्स्ट्रॉर्डनरी फास्ट, द फास्टेस्ट इन एनी वायरस, इवन इट हैज़ क्रॉस्ड, वी बिलीव इट हैज़ क्रॉस्ड इवन मीजल्स विच वाज द बेंचमार्क फॉर अ स्प्रेड। सेकेंड इज इट विल इन्फेक्ट मोस्टली थ्रोट rather than lungs, and third is reinfections and breakthrough infections जिसको कहते हैं, you already are vaccinated, it will yet infect you. So ये 3 खासियत हैं, इन पर हम डिटेल अगर बात करें कि क्यों ये 3 खासियत हैं, but that is what is causing worry and each of them is causing worry to us
I will tell you how it causes worries for the public, health because of these three properties. तो डॉक्टर साहब ये बताएगा कि जो परसों से जो केसेस जो बढ़ चुके हैं 3,000 के करीब केस पॉजिटिव पाया गया, उनमें यही सिम्टम जो आपने अभी जिक्र किया कि जो थ्रॉट इन्वॉल्व होता है उनमें, लेकिन जितने भी मतलब जो परसों से जो केसेस पॉजिटिव पाए, कि आपको क्या लग रहा है ये डेल्टा वायरस के जो पेशेंट्स है या जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके जो केसेस? वेरी 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 इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आई टेल यू आकिब साहब कि होता क्या है, जब भी ये थर्ड वेव होगी तो ओमिक्रॉन गेट्स इनटू द सोसाइटी एंड यू ऑलरेडी हैव डेल्टा देयर। सो इस ओमिक्रॉन में ये खासियत है कि इट डिस्प्लेसेस as weeks go or days go, it will displace delta. So if you see, let's say 10 days back when it got into Kashmir, maybe 10% were because of Omicron and 90 were because of delta. But as we go in days and probably a week or 10 days, तो डेल्टा के जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है और ओमिक्रॉन की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है till there is a saturation. That means nearly 90% cases will be because of Omicron. So as of now, let us say Delhi, major or Bombay, because the waves are nearly saturated there. Majority of the cases are because of Omicron and Delta has disappeared. Because that is the very characteristic property of this virus, that it will displace other. Normally it doesn't happen. Normally they should all stay together and compete. But because it goes so faster than delta, the delta will reduce its percentage. Abhi mere khayal mein, we have just started the wave. Now, yesterday there were 3,500. It's about 5-6 days or 10 days old disease. So considerable percentage will be Omicron, delta and Omicron together. And as we go, the Omicron will go up and delta will come down. It will only be determined by the genomic sequences कि day to day कितने Omicron percentage है और कितने delta है. But there's no doubt by the time the epidemic or pandemic gets saturated, that means there are maximum cases, all will be because of Omicron. So that is a very characteristic feature of this, and that is epidemiologically true because of the rate of spread of this disease. It will displace delta correspondingly. डॉक्टर साहब लोगों से जब हम बात करते हैं कोई बीमार होता है सर, तो वो कह रहे हैं कि नॉर्मल फ्लू, क्योंकि अभी आपको पता मौसम बर्फ़बारी हो रही है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, माइनस टेम्परेचर में रहते हैं। पुरानी कहावत है कि इसमें ये जो नॉर्मल फ्लू होता रहता है, तो लोग कह रहे हैं कि ये नॉर्मल फ्लू है। उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? क्योंकि सर जितने भी सिम्टम्स ओमिक्रॉन वेरिएंट में, वो सारे लोग कह रहे हैं कि नॉर्मल फ्लू में भी है सर। There is no doubt कि Omicron as a general is a mild disease. अगर आपके 100 पेशेंट डेल्टा के थे, about 20 to 30 will go to the hospital. There is no doubt. अगर Omicron के 100 पेशेंट है, only about 5, 6 or 10 will go to the hospital. So the severity of disease, there is no doubt, is less. But then there is a catch. Because delta was not going so fast. Now this is a tsunami. Now this is a tsunami. Like in US, there were 14 lakh cases, and US is 1/5 of India. 14 lakh cases, because that is how it spreads. So the quantum of the load or cases will be so much that even in this 5%, if they go to the hospital, it might saturate our hospitals. So it is not related to the severity, it is related to the quantum of the infections, because it spreads so fast and so many people get infected. So it will cause a similar or more severe problems for the healthcare and the healthcare delivery and the hospitals than even Delta. So that's an important thing. We cannot just take it, चलो जी ये mild disease है, होने दो, कोई परेशानी नहीं है. But it can cause problems. Now, why does it cause problems? Why are those 5% it causes problems? One, it causes problems in those people who are not vaccinated.
So that is a very dangerous thing not to get vaccinated. Although it will infect people who have 1 or 2 doses, but people who are not vaccinated, it will send them to number of people to the hospital. एक बात. दूसरी बात, those people who are elderly have comorbid disease. ये भी problem है. It will, it may be not 20, maybe 5%, 1% will go to the hospital, but once they go to the hospital, because the number is so much, the deaths will be there. So 2 things will happen. One, the number of people will be extraordinarily high who get infected, and second, it will, to that small percentage of people who have severe disease, it will send them to the hospital, so healthcare might get under a lot of stress. And there is another catch also, that for sure this virus in particular affects doctors and healthcare workers. वो आज देख भी रहे हैं. ये तो आप देख रहे हैं, because that is the property of this virus. Yeah, I'll tell you why do doctors and healthcare workers get infected? Because number of people who come to the hospitals, 80% will have no symptom. So let us say there are 100 people who go to the hospital for something else, cardiac disease, GI disease, or कोई regular जो follow-up है. There will be number of people who will be infected, who will have the virus in their throat, and as soon as the doctor sees them, the doctors and healthcare workers get infected. I suspect about 30% of the healthcare people, if we don't take care, will be off sick because of Omicron. So that's a huge problem. Now, if 30% people get off sick, then there is a huge quantum of people who get infected, and a small percentage go to the hospital. So there is a big disparity. You can't carry the healthcare. The hospitals will be under a lot of pressure because the doctors are ill. The second thing it infects, particularly, is children. Now that's a reason for that. One, because of it is how it spreads, and second is children have not been vaccinated. They haven't got even the first dose. अभी तो शुरू हो गया children vaccination, and that also in between 15 to 17. 15 के नीचे कोई वैक्सीन ही नहीं है. So 3 things. One is the quantum of the infection. Second, doctors and healthcare workers get infected, and third is children will get infected. So this is another new thing which we are seeing in Omicron, which we did not see with the same force with Delta. डॉक्टर साहब, अब हम कंट्रोल की बात करते हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे हम इसको रोक सकते हैं. डॉक्टर साहब, कल श्रीनगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक और वीकेंड लॉकडाउन का एहतमाम किया. यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम इम्पोज करेंगे वीकेंड लॉकडाउन को. आज ख़त्म भी हुआ है वो. क्या आपको लग रहा है कि लॉकडाउन की ज़रूरत है? क्योंकि लोग, हमने भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा एहतियात करते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं, सोशल डिस्टेंस उतनी तो नहीं होती है, बट मास्क का प्रयोग करते हैं. आप बताइएगा कि लॉकडाउन इसका सलूशन है या कुछ और भी है करने के लिए? मैं ऐसे बताऊं आकिब साहब आपको, whenever a governmental agency gives lockdown, they don't want to put people into trouble. I am sure any governmental agency will be very unhappy to give a lockdown, but they have to understand tomorrow, if the number of cases are so much that they cannot take control in the hospital, they have to use these measures which are very uncomfortable. But other than that, let's see, they are doing it just because they don't want their hospitals to get overloaded. Doctors are already sick, healthcare workers are sick, and if there are thousands of people who go to the hospital, who is going to take care? So that is a temporary measure to reduce the impact to spread of the virus. But the control of the disease is with the public. And if public comes into real responsibility, the disease will dampen and the disease spread will be less. So what are those things? One is
standard operating precautions. Repeatedly we discuss about them. That is one part, that public takes care about their own habits, so that this infection does not spread as fast as it is. Second thing is vaccination. That if somebody has not taken a first dose, he should take it. If somebody has taken first dose, let him take a second dose. And if somebody has taken a second dose a few months back, he should take a booster if he is within that group. That means doctors and above 60 or who have comorbid diseases. The government of India, they have given clear instructions. So if of one side we take care about self, so what are those? The most important thing is the mask. Now very important is disease mein masks are fundamentally important. Not only the mask, the quality of mask. अभी आप देख रहे हैं, this is a surgical mask. ठीक. This is a cloth mask. इसमें बताइए कि कौन सी यूज करनी है. Yeah, I'll tell you. This is a cloth mask, and these are the protective masks, which are called N95 masks, which are two different. One is from, with two different names, but they are N95 masks. Now, if a common man goes to a market or in general, which exposure is not very high, then probably a surgical mask would be good and okay. But I'm telling you, for a particular group of people, now that surgical mask has to cover his nose, has to cover his mouth, and cover his chin, and it should be tightly fitting here. For that, a surgical mask like this is generally okay. But if the exposure is less, generally people seeing cloth masks are not as protective as surgical masks. So I would recommend that if somebody has a low risk, then surgical mask okay. But for this infection, because the spread is so fast and so, I would say so virulent, N95 masks, which are these two masks, or even using a double mask as I am using, are more protective. So if you are likely to get exposed higher, like doctors, or if your exposure is high where you are in a congested place, you can't avoid it, a meeting or something, or you probably feel that you are seeing a person who may be sick, then probably an N95 mask is recommended. Again, which is very fitting fully and which is protected. So that's number one. Number two is, while the pandemic is going on, the best thing is to, if you can avoid going out, avoid it. Stay home. That is, if you can do that. But then you have to work also. You can't avoid going out. So if you going out in a market which is not very congested, or on a road, or even in a field, the exposure is very mild. But why is the exposure maximum? Exposure maximum is if there are a lot of people in a room where windows and doors are closed. Now, in that circumstance, the exposure is the highest. So why do we go into that? Somebody, किसी की डेथ होगी तो आप जा रहे हैं उधर, किसी की मैरिज है आप जा रहे हैं उधर, और कोई मीटिंग है आप जा रहे हैं उधर, और कोई सोशल गैदरिंग है, और कोई पॉलिटिकल गैदरिंग है, where lot of people stay in one room and it is not well aerated, the whole air gets infected. To protect from Omicron in that is difficult. So try to avoid situations like this. That is the second thing. Third thing is that as long as you are out, keep the mask on from the time you are going to the time you come back. One place where exposure is maximum, particularly in the restaurants, when you take off the mask, you want to eat something or you want to drink water, उस वक्त exposure होता है. Be very careful that time. When you are eating, don't eat together. Don't face to face. Just go away. And if you are दिन में कहीं खाना तो है ही, चाय तो पीनी है, पानी तो पीना है. So those are the times when you
remove the mask and you can get infected. So be careful that time. Last thing is your hygiene. You must wash your hands with water, soap and water. Soap and water or alcohol. These are 70% alcohol. Not with anything else. कोई chemical हो या कुछ और हो, no. Only two things work for corona. Either soap and water or 70% alcohol. No other disinfectant. Because these, इसमें कोरोना में क्या होता है, इसमें फैटी एक चर्बी की एक लेयर होती है बाहर. And only two things dissolve that. Either soap and water or 70% alcohol. So use it regularly. If you have soap and water, that's good. Wash it for about 20 seconds fully. If you don't have it, then you use 70% alcohol. So these are one thing. And vaccine, I already told you. If we follow that, two things will happen. Omicron may yet spread, but it will not be as fast as we are. The healthcare will not come under stress, and we don't have the necessity to do a lockdown. However, if we don't do that, then what will government do? See, they will be very uncomfortable to do a lockdown, but then they don't have a choice. डॉक्टर साहब मेरे आखिरी कुछ अहम क्वेश्चन है. अब एज ए सीनियर डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट, एज ए सीनियर एक्स डायरेक्टर SKIMS, अब ये बताएं कि पिछले साल भी आपने प्रेडिक्शन की थी 10,000 के करीब केस को पॉजिटिव पाया गया. वही हुआ, 6-7 हज़ार के केसेस को पॉजिटिव पाया गया था. लेकिन आज की जो वेव है, लगातार इसमें कुछ ही दिन पहले 100 के करीब केस को पहुँच, लेकिन 6 या 7 दिन के बाद ही 3,000 के से ज़्यादा केस को पॉजिटिव पाए गए. तो क्या आप प्रेडिक्ट करते हैं कितने केसेस बढ़ सकते हैं यहाँ पे? ओमिक्रॉन की जो डबलिंग टाइम है, डबलिंग टाइम हो गया कि कितने दिन में 10 से 20 हो जाएंगे, 20 से 40 हो जाएंगे, 40 से 80 हो जाएंगे. ओमिक्रॉन की जो डबलिंग टाइम है, दैट इज़ 2 days. While for Delta, it was between more than 5 days. Even some people were saying 10 or 15 days. So the cases will come very fast, and you've already seen it, not only here, everywhere in the world. The doubling time of Omicron is very, very fast. Now, what will be the peak? It is said that India में calculation में, which could be completely wrong, and I would pray that that is wrong. कि इंडिया में it may reach 14 lakhs. अभी तो कोई 2.5 lakhs हो गया. But there is a good news that a substantial of our people have already been infected by Delta, and we have already got a good number of people have got a vaccine. It may not reach 14 lakhs, but it has already reached 2.7 lakhs. That was the maximum. I generally feel, unfortunately, the number may be high, but what exactly will be the number is very difficult to calculate for India. But for J&K, we have a good signs that we have already come out of one wave, that is the Delta wave, and at least the health department has done good job to vaccinate number of people. So my suspicion would be that we may not peak too much. If it is 3,500 was yesterday, if it goes on for another, I would say 10 days, it may reach around the same as we had last time, and then it will probably flatten. So, but the deaths will not be as many as we had in Delta. So there is no doubt about that. But the number of cases, and many of these cases now are not being even reported because people do rat test at home and they don't report it. So you may not even know how many cases are there. But generally I would feel it would be around 5,000 or 6,000, then it will flatten and then may come down. Unfortunately, if it goes more than that, it would be not very good for healthcare. But I suspect it would be around same as we had last time, because government is also pushing a lot of effort to reduce dampen the spread, and people are also getting quite a bit of responsible
when they see the scare by the Omicron. So it might just come down same as we have last time. डॉक्टर साहब मेरा आखिरी क्वेश्चन है, ये बताएगा कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं जब उन्होंने ये सुना है कि इसकी जो स्प्रेडिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये भी कहा गया है कि हर एक घर में ये जो वेरिएंट है ये पहुंच सकता है, तो लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज है? लोगों के लिए मैसेज है कि यू हैव टू बी कॉशियस एंड केयरफुल एंड टेक केयर, but don't panic. This is not a panic situation. Yes, you have to take care about your elderly, you have to take care about yourself, you have to take care about your children, you have to take care about pregnant women, and I told you how to take care about that. But there is no need to panic. Second thing is, please use the standard procedures what are there, practice them at home, practice them at your work, and third, look at your vaccination protocol. And God forbid if any of your home people get sick, I told you, if it's a mild disease in a healthy person, it's a different significance. Mild disease in an elderly or comorbid has different significance. Or if it starts with a serious disease, as Delta would start, then hospitals are available and they are fully equipped with treating those, with drugs and with all the equipment. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के Thank लिए। you. ये थे हमारे साथ डॉक्टर MS खुरू साहब जो एक्स डायरेक्टर सिक्मिस थे, इनसे विस्तार से बात की है हमने, और इनका यही कहना है कि लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन SOPs का पालन करना चाहिए, और जो भी तिब्बी माहिरीन की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है उस पर पालन करें, हम इस महामारी से बच सकते हैं। कैमरामैन साहिल मीर के साथ मैं आकिब डार, एशियन न्यूज़ हब, श्रीनगर।